Okay. In today's talk, we will talk about closing the first module, that is equation of equilibrium in Cartesian coordinate as well as equation of equilibrium in polar coordinates, right? And we have seen in 3 dimension the equations of equilibrium in x direction is curl sigma x by curl x plus curl tau x y by curl y plus curl tau zx by curl z plus gamma x equal to 0. This gamma x is nothing but the body force. Okay. Same way, gamma y is the body force component in y direction. Gamma z is the body force component in z direction. And this is the equation of equilibrium in y direction, equation of equilibrium in z direction. We have discussed that equations of equilibrium have a significance in such a sense that if the state of stress exists, that state of stress must satisfy the equations of equilibrium, right? So we have seen this part, right? We can deduce the same thing for 2-dimensional stresses. For a case of plane stress, we know that sigma z is 0. So when sigma z is 0, you can say that this term is 0. Tau xz is 0, this is 0. Tau yz is 0, this is 0. So same way tau yz is 0, tau yz xz is 0. Okay. Also, you are treating that gamma z is 0, that body force component is also 2-dimensional. So in that case, one can get the 2-dimensional equations of equilibrium as curl sigma x by curl x plus curl tau xy by curl y plus gamma x. Gamma x is nothing but the body force in x direction equal to 0. And the second component is curl sigma y by curl y plus curl tau xy by curl x plus gamma y equal to 0. So this is the same equations which we have written here. Okay. So these are the equations of equilibrium in Cartesian coordinate system. Now, as we have discussed in our curriculum or syllabus, that we will deal with many components which are curved in nature. For example, curved bars, beams, okay, cylinders, rotating discs. So these type of components cannot be modeled in XYZ coordinate system. ठीक है? जब भी हम modeling करते हैं तो modeling में we choose our axis system first of all. So if our geometries are flat, for example, a plate structure, a simple shell structure, okay, or a beam structure, so you can easily model them in Cartesian coordinates like X, Y, and Z coordinates. Okay. But if you have components which have radial direction or tangential direction or in angle of revolution, a conical structure, okay, or a conical dome here, so that type of structure cannot be expressed in XYZ coordinates. You must express it in terms of r sine theta and r cos theta, etc. Right? So therefore, we require the cylindrical components as well to describe. Right? So इसीलिए we must see the differential equation of equilibrium in cylindrical coordinates. We are not deriving this, but yes, we can do this when we actually see the stresses in cylindrical components. Okay, so I have written here only the 3-dimensional equilibrium equations in cylindrical coordinates. So you please recall those rather than going into derivation. Okay, so this is force. This is sigma Fr equal to 0, force equilibrium in radial direction. This is force equilibrium in axial direction, that is Z equal to 0. And then force equilibrium in tangential direction or circumferential direction, that is F theta is equal to 0. Right? So you can see that curl sigma R by curl R plus curl tau R Z by curl Z. Only thing which you will notice here that whenever you have R theta component, tau R theta, it will be divided by 1 by R in a differential limit. Oh, sorry, the components with respect to theta. It may be tau R theta, it may be tau theta Z, or it may be sigma theta. So that time it will be 1 by R theta by curl sigma theta by curl theta. So these are the
force equilibrium, force equilibrium equations in r, theta and z directions in three-dimensional cylindrical coordinates. अब जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में प्लेन स्ट्रेस की कंडीशंस होती हैं, where we say that tau xz is equal to 0, tau yz equal to 0 and sigma z is equal to 0. In cylindrical coordinates as well, these are the equilibrium equations for three dimensions. These are the 3D equations, which we have seen on the previous slide, that is sigma f r equal to 0, sigma fz equal to 0 and sigma theta equal to 0. So it is a r, theta and z coordinate system. One is r direction, other is z direction and theta direction. For example, अगर हम सिलेंडर की बात करते हैं, ठीक है, let us talk about this tube. Okay, तो इसकी जो ये एक्सिस है, let us say this is z axis, this axis is r axis, so radius, z axis is the along the length, along the longitudinal length, and theta is this direction. Okay, ये direction आपकी theta हो जाएगी, because the radius will keep on changing. No, sorry, radius will remain fixed obviously, but vector along the radius, displacement vector along the radius may keep on changing. Okay, so that is a theta direction, tangential direction. Right? इसमें दो टू डायमेंशन केस हो सकते हैं. One is plane stress case. Plane stress case is similar to what we have done there. That is sigma z is equal to 0, tau rz is equal to 0, and tau z theta equal to 0. Okay, and we are treating that it is in absence of body forces. ठीक है, तो जैसे ही ये तीनों स्ट्रेसेस जीरो होंगी, I know that tau rz is equal to 0, so this will be 0. Okay, so your first equation will be curl sigma r by curl r plus 1 by r curl tau r theta by curl theta plus sigma r minus sigma theta, so that will be sigma fr equal to 0. ठीक है, सेम वे सिग्मा f theta वाली इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन हम पहले देख रहे हैं, दिस विल रिमेन एज इट इज, थीटा z दिस विल बी 0, sigma theta by curl theta it will remain as it is, this will also remain as it is. So you will have this expression as f theta equal to 0. But when you look at the second equation, that is in z direction or in longitudinal direction, tau rz is 0. Okay, sigma z is also 0, theta z is also 0, gamma z we have considered equal, term koi exist nahi, tau rz is also 0. Okay, we have already said that it is 0. So you can see that second equation vanish completely. ठीक है, तो हमारे पास प्लेन स्ट्रेस केस में दोबारा दो ही इक्वेशन बच जाती हैं, वन इज इन रेडियल डायरेक्शन, अदर इज इन थीटा डायरेक्शन और टेंजेंशियल डायरेक्शन. राइट, सो इफ यू हैव ए केस लाइक ए थिन सिलेंडर, ठीक है, एक थिन सिलेंडर अगर है तो उसकी जो कंडीशंस बन जाएंगी वो प्लेन स्ट्रेस या प्लेन स्ट्रेन की बन जाती है. वी विल डिस्कस द प्लेन स्ट्रेन केस व्हेन वी हैव ए एनालिसिस ऑफ स्ट्रेन इन द नेक्स्ट चैप्टर. ठीक है, बट दिस इज ए टू, हम कैसे किसी थ्री डायमेंशनल केस को टू डायमेंशन केस में अज्यूम कर सकते हैं. सो ए थ्री डायमेंशनल सिलेंड्रिकल केस can be converted into a plane stress case by assuming that sigma z is 0, tau rz is 0 and tau z theta is equal. So these are the few assumptions which you can take up. Right? सर फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन में गामा और गामा थीटा वो कैसे डिलीट हुए, वो समझ नहीं आया. हमने यहाँ पर ये कह दिया है कि it is in the absence of body forces. We have written this in the absence of body forces. ठीक है, लेकिन कैसे अलग हुए? जनरली जब हम z डायरेक्शन की फोर्सेस को इग्नोर करते हैं, like in previous case as well, तो we ignore the component of this body force also in z direction. For example, अगर हम वेट लेते हैं और टू डायमेंशन में काम कर रहे हैं तो हम वेट के दो कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे, x और y में. लेकिन अगर हम थ्री डायमेंशन में काम कर रहे हैं तो वेट को हम तीन कंपोनेंट्स में डिसॉल्व करेंगे.
right? Yes, sir. So now just let me undo this part. There is another. Okay. Okay. There is another special case of three-dimensional cylindrical case, that is axis symmetric case. This is also a two-dimension case. Axis symmetric, as the name suggests, the component which is symmetric about its one axis. ठीक है, जैसे सिलेंडर का कंपोनेंट हो गया, या एक पर्टिकुलर कंपोनेंट जो एक्सिस सिमेट्री का होता है वो इस टाइप का कंपोनेंट हो गया, एक कॉनिकल डोम. Okay, now if you see this component, it is symmetrical with respect to this axis, but it can be expressed in terms of this theta. Okay, so when your structure is axis symmetric, your stresses do not vary with theta. With theta, and your tau theta z and tau r theta is equal to 0. तो इसमें दो कंडीशंस आ जाती हैं. एक तो हमारी जो shear stresses है जो z डायरेक्शन, जो टेंजेंशियल प्लेन पर है या टेंजेंशियल डायरेक्शन में है. ओके, because theta is related to tangential. So those shear strains are 0. That means tau theta z is 0, tau r theta is 0. But tau rz is not 0. And the stresses do not vary with theta. This will remain as it is. This will remain as it is. When I say that the stresses do not vary with theta, because I have already stated tau r theta is 0, so this term will vanish and sigma r minus sigma theta by r will remain. So curl sigma r by curl r plus curl tau rz by curl z plus sigma r minus sigma theta by r equal to 0. That is coming from sigma fr equal to 0. Sigma in radial direction equal to 0. And then we look for the second equation, tau rz by r, it will remain as it is. Curl sigma z by z, this will also remain as it is. This will vanish because tau theta z is 0. Tau rz by r will remain as it is. We are already ignoring the body forces. आप रख भी सकते हो body forces को, there is no such issue. Okay, आप यहाँ पर gamma r और gamma z की terms रख सकते हो. You can do this in here as well. In presence of, अगर आप यहाँ पे in presence of body forces की बात कर रहे हो तो आप दो equations को लेकर चलोगे. And sorry, this is z. So you can see that you get this equation with sigma fz equal to 0. Right. Now, when we say that stresses do not vary with theta and tau theta z and tau r theta equal to 0, that means this will vanish. Tau theta with z will vanish. Now, if you see this term, sigma theta is not 0. Okay, but sigma theta is not 0, but its variation with theta is 0. So this will be 0. Tau r theta is again 0. Okay, gamma theta we will not consider if there is no other force in z direction, in theta direction. Okay, so that means we will erase this term, and two-dimensional equation for axis symmetric case are obtained, which are as these. Okay, we will not use these equations right at this moment. After MS3, जब हम special cases करेंगे जैसे सिलेंडर के होते हैं या conical dome हो, or it is a circular disc, rotating disc, thick cylinder, so we will do these kind of components. उन components में हम इन equations को दोबारा से एक बार. So at this stage, you try to remember them. We will not go into implementation of equilibrium equations in cylindrical coordinates. ठीक है? Cartesian coordinates का implementation हम करेंगे. We have seen a numerical, I think, in last lecture. And with this, I think we complete our first module. Okay.
And जो references मैंने, I think we have put this on LMS as well. We are using a book of Srinath Ellis, various good numericals which I see in Boresi AP. Okay, this is Advanced Mechanics of Materials, and the first one is Advanced Mechanics of Solids. So in our next level, we will start with analysis of strain in 3 dimension. ठीक है, तो इसमें कोई डाउट हो अब तक तो आप बताइए, नहीं तो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं. सर मोहर सर्कल में एक बार फिर एक्सप्लेनेशन दे दीजिए. मोहर सर्कल से नहीं हो रहा. और ठीक है मैं आ रहा हूँ मोहर सर्कल पर. लेट अस से कि हमें पता है 3 स्ट्रेसेस, सिग्मा 1, सिग्मा 2 और सिग्मा 3. प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हमें मान लो कि पता है. ओके, एंड वी फर्स्ट अरेंज देम इन ए डिसेंडिंग ऑर्डर, दैट इज सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2 इज ग्रेटर देन सिग्मा 3. मोहर सर्कल इज वेरी इजी इन 3 डायमेंशन. ठीक है, सबसे पहले तो हमें एक रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स बनाना है, विच इज ए कन्वेंशनल normal stress is along x-axis and shear stress is along y-axis. Okay, और origin पर हमारा O है. Let us look in terms of values. Let us say sigma 1 is 10, sigma 2 is 6, and sigma 3 is -4. Okay, so first of all mark OA equal to sigma 1 which is equal to 10 units. ठीक है, तो यहां से मैंने 10 यूनिट, let us say 10 units are here, तो इसको मैंने A कह दिया. ओके, then mark OB is equal to sigma 2 which is equal to 6 units. So मान लो कि 6 somewhere here है. This is OB. ठीक है, same way mark OC is equal to sigma 3 which is equal to -4. So let us say here OC. ठीक है, तो जैसे ही ABC मार्क किए, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक A and C. ओके, A और C कोई भी 2 पॉइंट लो. लेट अस से वी हैव टेकन AC. इन दोनों का मिड पॉइंट लोकेट करो. ओके, और यहां से एक सर्कल बना दो. दिस इज मोहर्स फर्स्ट सर्कल. ठीक है, इसके बाद B और C को डायमीटर लो. B और C का डायमीटर लेने के लिए इसका मिडिल पॉइंट लेना पड़ेगा. लेट अस से समवेयर हियर. ठीक है, और यहां से भी एक सर्कल बना दो. And third circle obviously you draw with A and B. Take AB as diameter और यहाँ से these are the circles. I'm not able to draw it well. Okay, so ये तीनों के तीनों ही सर्कल है. तो this is nothing but Mohr's stress circle in 3 dimension. All 3 circles are known as Mohr's circles in 3 dimension. ठीक है, तो 3 डायमेंशन में हमें ज्यादा कुछ नहीं करना. एक तो हमें ये सर्कल ड्रॉ करने हैं और एक स्ट्रेस प्लेन शो करना है. तो जो ये इंक्लूडेड पोर्शन है जो मैं डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इस जोन को बोलते हैं मोर स्ट्रेस प्लेन. मोहर स्ट्रेस प्लेन और पाई प्लेन. इट इज ऑल्सो कॉल्ड पाई प्लेन और मोहर स्ट्रेस प्लेन. ठीक है, और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो नहीं है कि डिटरमाइन द 3 प्रिंसिपल shear stresses. Tau max 1 which is equal to half of
सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3, तीनों सर्कल का जो रेडियस है उसको हम शियर स्ट्रेस कहते हैं, है ना। तो टॉ मैक्स 1, टॉ मैक्स 2, हाफ ऑफ सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3, and tau max 3 is equal to half of sigma. So if I put in these plug in the values जो हमें मान लो दी हुई हैं या which we have evaluated as principal stress. So 10 minus 4 is 10 plus 4, 14 by 2, which is equal to 7. Okay, and then we have sigma 2 is 6, 6 plus 4, 10 by 2 is 5. Okay, and then we have sigma 1 minus sigma 2, that is 10 minus 6, 4 by 2 is 2. So these are the maximum shear stresses on this plane, and these are represented by, अगर इसको डिनोट करना हो हमें फिगर पर, तो ये बड़े सर्कल का ये सेंटर है, यहां आएगा, दिस इज OD, this will be OE, this will be OF. Sorry, I had to unmute myself for some reason. तो तीनों सर्कल का जो टॉप पॉइंट होगा वो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करता है. फॉर एग्जांपल इन लार्जर सर्कल द पॉइंट D, पॉइंट E एंड पॉइंट F, and they will represent the magnitude 7 units, 5 units and 2 units respectively. और कोई डाउट इस चैप्टर में? तो ये पाइपलाइन क्या डोनेट करता है हमें? पाइपलाइन ये डिनोट करता है कि कोई भी स्ट्रेस वैल्यू, जैसे एक चीज हमने जो नहीं की यहाँ पर वो क्या है पहले मैं ये बताता हूँ. अब हमने जो 2 डायमेंशन में हम ये भी करते हैं कि मान लो कि कोई प्लेन दिया हुआ है, हमें कोई पॉइंट दिया हुआ है, सॉरी कोई प्लेन दिया हुआ है, उस प्लेन के ऊपर स्ट्रेस कितनी आई है, ठीक है. तो कोई भी फिजिबल प्लेन इस स्ट्रेस सिस्टम में जो भी स्ट्रेस लाई करेगी वो विद इन पाइपलाइन लाई करेगी, इस पाइपलाइन के बाहर लाई नहीं करेगी, ठीक है. एक्चुअल में एक और स्टेज इसकी होती है विच वी हैव नॉट डिस्कस्ड, कि मान लो ये कहा जाए कि प्रिंसिपल स्ट्रेस का ये यूज भी है कि डिटरमाइन द स्ट्रेस एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, ठीक है. तो मैं यहां पर क्या करूंगा, इस पॉइंट पर एक 30 डिग्री पे प्लेन बनाएंगे, जो यहाँ पे जहां इंटरसेक्ट करेगा उसकी वैल्यू हम इवैल्यूएट करेंगे. वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट पार्ट, ठीक है. तो विद इन पाइपलाइन एनी physical state of stress will lie within this plane only. It will not be outside this plane. ठीक है. Any other doubts throughout this chapter? जिस पॉइंट को हम ज्यादा फोकस कर सकें. सर अगर यही मोहर सर्कल में कोई और प्लेन के डायरेक्शन को साइंस दिए होंगे तो कैसे निकालेंगे? हम वो चीज नहीं कर रहे हैं. आई एम रिपीटिंग अगेन, हम 3 डायमेंशन. ट्यूटोरियल में क्वेश्चन है. किसमें? ट्यूटोरियल में मोहर सर्कल पे सिर्फ स्ट्रेसेस निकालने के लिए है. सर एक है जिसमें प्रिंसिपल स्ट्रेसेस दिए हुए हैं और डायरेक्शन को साइन दिए हुए हैं किसी और प्लेन के, तो हम बोल रहे हैं मोहर सर्कल से निकालो. लेट मी चेक. मैं आई थिंक उस चीज को स्किप कर रहा हूँ, हम नहीं रख रहे, बिकॉज दैट विल टेक 1 or 1.5 लेक्चर टू एक्सप्लेन मी. और थोड़ा सा हमें इस बार ऑनलाइन होने की वजह से 1-2 टॉपिक को हमें मिक्स करना पड़ेगा, तो इसीलिए मैंने उस चीज को नहीं रखा है. अगर ये ट्यूटोरियल में है तो इस पार्ट को आप छोड़ दीजिए. ओके, देयर आर 2-3 थिंग्स जो हम पहले कन्वेंशन में, लेट मी टेल यू ऑनेस्टली, जो हम पहले कवर करते हैं और इस बार नहीं कर रहे हैं. एक ये वाला पॉइंट छोड़ा हमने छोटा सा, और दूसरा जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हैं इक्विलिब्रियम, उसकी हम डिराइव करवाते हैं पहले. ओके, तो उस डेरिवेशन को भी हमने छोड़ा है. रेस्ट अदर थिंग्स वी हैव कवर्ड. तो हालांकि डेरिवेशन जो है हम एमएसटी के बाद क्योंकि वो टॉपिक करेंगे, तो वहां पर अगर हमारे पास टाइम बचता है तो वी विल कवर दैट पार्ट.
any other doubts? So in Mohr circle अभी तक हम यही कर रहे हैं. Actually why I am not going into this, क्योंकि एक्चुअल में Mohr circle के लिए हमें क्या करना पड़ेगा. It is the same thing जो मैंने यहाँ पर लाइन ड्रॉ की है कि ये हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन एंगल एंड देन वी विल ट्राई टू इवैल्यूएट दैट. ठीक है. इट बिकम्स वेरी कॉम्प्लेक्स व्हेन वी ड्रॉ फ्रॉम द ज्योमेट्री. लेकिन अगर ये एक फिगर है, ग्राफ पेपर में है या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में है, तो बड़ा आसान हो जाता है कि लेट अस से आई वांट दिस पॉइंट, तो मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिख जाएंगे. ठीक है. सो देयरफॉर इन एनालिटिकल फॉर्म इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू डू. We have done this for using Cauchy stress. Cauchy stress से हम किसी भी arbitrary oriented plane पर stresses निकाल सकते हैं, है ना? Okay, any other doubts? No sir. ठीक है, तो हम आगे चलते हैं. Sorry. In analysis of strain. So our next topic is module. Let me start recording. I think मैंने recording बीच में बंद कर दी. Okay. So in our next topic, we will look at strain analysis. Okay. It is mostly we go into the same thing as we have done for stress analysis. कि पहले हमने state of stress निकाली, then we have evaluated the state of stress at various orientation with different angles. ठीक है, direction cosines दिए हों और हम stress निकाल सकें. Then we have evaluated principal stresses, and then we have evaluated the stress invariants and then equations of it. Here also we will go in the same way. First we will start with what is a strain. So strain can always be expressed in the form of displacement. तो सबसे पहले हम deformations बताएंगे, displacement बताएंगे क्या होता है. Okay? और उस displacement को हम express करेंगे strain में. Now once you express the strain, we need to define strain at a point, which is exactly in the same way as we have defined stress at a point. Okay? And once you do that, you can evaluate the strain in any direction of a vector. Okay? And hence principal strains and then strain invariants. तो काफी चीजें similar चलेंगी, even evaluation procedure भी काफी similar रहेगा यहाँ. Right? So let us proceed towards this. Okay. So what will be outcomes of this particular unit? We will introduce, and first we will talk about what is the deformation of a point. For example, if you have this body, and you have a point P here, और इस body पर arbitrary load लग रहे हैं. Okay, so what will be the deformation of this point P and in its neighborhood? Neighborhood means इसके बिल्कुल आसपास कोई point, not this point, but yes, this point. Okay, the point which is Q, but not which is R. So R point is a farther point, and it is in neighborhood. And then you find the change in length of a linear element. Let us say कि ये एक body है, okay? It is subjected to certain forces. Sir, your right? voice is cracking. And there is a linear. Yes. Your voice is cracking, sir. Voice is cracking. Okay, maybe. नहीं सर ठीक आ रही. Okay. I think you need to check your own connection as well. So let us say that you have this body, okay, and it is subjected to certain forces. So when it is subjected to forces, every point will change its position. ठीक है? तो in this topic we will see the relative change of a point, and then linear element. हो सकता है कि पहले ये point जो है ये PQ हो, लेकिन deformation होने के बाद में let us say this is PQ. हो सकता है कि forces
लगने के बाद ये P प्राइम Q प्राइम हो रहा है. Okay, so what is the change in length of this linear element? So that we can see, and hence we can define what is a axial string. ठीक है, और ये भी पॉसिबल है, मैंने एक ही डायग्राम में आपको दिखा दिया है कि लेंथ भी चेंज हुई एज वेल एज एंगल भी चेंज हुआ. ओके, दिस लेंथ भी चेंज हुई और एंगल भी चेंज हुआ, दैट रोटेशन हैज टेकन प्लेस. तो जब रोटेशन हुई है इसका मतलब क्या है कि shear strain हुई है. अगर चेंज इन लेंथ हुई है, whether if it is a increment in length or decrement in length, then we say that it is a axial strain or normal strain. But when the rotation has taken place, then we call it as a shear strain. ठीक है, तो ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे. At last, volumetric strain, and volumetric strain is nothing but epsilon x plus epsilon y plus epsilon z. Again, we are still working in Cartesian coordinate system. Okay, then we will define what is a principal strain, what are strain invariants and strain deviator, compatibility conditions, something which we will see कि जैसे स्ट्रेस को एग्जिस्ट करने के लिए इक्विलिब्रियम इक्वेशन को सेटिस्फाई करना पड़ता है, देयरफॉर स्ट्रेन की भी यूनिकनेस के लिए compatibility conditions को satisfy करना, right? So these are some conditions which we will see in detailed derivation, right? So we will put this in 4 different parts. So part 1 is introduction and deformation. Part 2 is change in length of a linear element, volumetric strain and principal strain, and part 4 is strain deviator and compatibility conditions. Okay, so let us have a look at first part today. What is introduction and strain part? Okay, so first part is change in, as we see the title, strains in 2 dimension. तो अगर हम 2 dimension में strains देखते हैं, so we know that if they are subjected to axial forces like this, it will tend to elongate, right? So and this epsilon x, which is normal strain in x direction, will be equal to delta ux by delta x, where delta x is its original length and delta ux is the elongation. Okay, so one can define epsilon x as delta ux by delta x. Same way, linear strain in y direction. So if this is y direction and this dimension is delta y and increment in delta vy or delta uy, sorry, अगर u से ही represent कर रहे हैं हम, so epsilon y will become equal to delta uy by delta y. ठीक है? And shear strain, whenever there is a change in orientation of linear element. तो ये चारों linear element हैं, इनमें change in orientation हुआ, so we will say that shear stress has taken place and the strain, corresponding strain is shear strain, right? So which is given by curl uy by curl x or delta uy by delta x plus delta ux by delta y. ठीक है? These are in 2 dimensions. Okay, if this can also be in terms of theta 1 and theta 2, where this angle is theta 1 and this angle is theta 2. Okay. Now, when we have seen the strain stress at a point. Okay, so correspondingly we have the strains at a point, right? I start with the stresses. We know that the normal stress are sigma x, sigma y, sigma z. So therefore, the corresponding stresses are epsilon x, epsilon y, and epsilon z. These are normal strain in x direction, normal strain in y direction, normal strain in z direction. Also, we have shear stresses as tau xy,
tau xz, tau yz. These are the 3 shear stresses, and we know that other 3 are equal to these. So we are actually dealing with only 3 of them, not 6 of them. Okay? And the corresponding strains are gamma xy, gamma xz, and gamma zx. I'm not writing the other 3 of these, that is gamma yx, gamma zx, and gamma zx. Sorry, this is gamma zy, because xz and zx are equal. So there are 3 normal stress strains, and there are 3 shear strains. So 3 normal strains as well as 3 shear strains. So these strains, when we express this in a matrix form, it is called state of strain at a point. और जो एक्सप्रेशन का ऑर्डर है वो बिल्कुल वही है जो हम स्ट्रेसेस में रखते हैं, एप्सिलॉन xx, गामा xy, गामा xz, गामा xy, एप्सिलॉन yy, गामा yz, gamma xz, gamma yz, epsilon zz. These are nothing but rectangular strain components or state of strain at a point. Okay. So state of strain is a tensor quantity, but rectangular strain components are described by magnitude as well as directions. क्योंकि इसको rectangular ही कह रहे हैं हम, because again same epsilon xx means strain in x direction, okay, and gamma xz means strain in x plane in z direction, okay. तो जो 2-digit notation होती है xz, xy, yz, इसमें से फर्स्ट डिजिट जो एक्सप्रेस करता है वो प्लेन को एक्सप्रेस करता है. So it is strain at y plane and x plane in z direction. सेकंड डिजिट जो है वो एक्सप्रेस करता है डायरेक्शन, राइट. Now sign convention for normals, we have I think discussed this part. नॉर्मल स्ट्रेन्स को तो बिल्कुल ही नॉर्मल स्ट्रेस की तरह एक्सप्रेस करते हैं कि if there is an elongation it is treated positive, if there is a compression it is treated negative, okay. So there is no issue with normal strains, that is epsilon x, epsilon y, epsilon z. If the elongation takes place the normal strains are considered positive. Sir, next class का time हो गया sir. Okay, sorry, let me complete only. We have 1 minute. Let me complete this part. So whenever you have the shear strains, in shear strains if there is a angle between the two faces is reduced, then it is called positive shear strain. So for example, अगर ये component पहले ऐसा था और ये चेंज होकर के ये एंगल 90 से रिड्यूस हो गया, एक्यूट एंगल हो गया, देन इट इज कॉल्ड पॉजिटिव शियर स्ट्रेन, क्योंकि यहाँ पर जो शियर स्ट्रेस आ रही है दे आर पॉजिटिव, ओके. इन स्ट्रेसेस को पॉजिटिव कहा था इसीलिए कोरोस्पोंडिंग स्ट्रेन पॉजिटिव है. एंड इफ द एंगल बिटवीन द टू फेसेस इंक्रीजेस, so this is an obtuse angle, then we say that the shear strain is negative, okay? So we will not proceed further. We'll take up in the next class, that is tomorrow, okay. Sure. Any specific doubts if we have, we can state, or else Yes. we will take them. सर श्रीनिवासन से कितने चैप्टर करने हैं हमने पहले से, फर्स्ट सेकंड के अलावा? MST से पहले, MST Yes, से sir. पहले, यस सर. MST से पहले हमारे मैं दोनों चीजें बताता हूँ. जो नॉर्मल फिजिकल क्लासरूम में हम 4 चैप्टर करते हैं, पर मुझे इस बार लग रहा है कि हम 3 कर पाएंगे. We will not be able to do 4th, but let us see how we proceed. ओके सर. अगर हम एक आधी डेरिवेशन स्किप करें then we can do. We will see this how we proceed. MST से पहले हम 4 चैप्टर, and 4th chapter is actually small theory of failure which you have done in machine design. यस सर. Okay. ओके सर. ठीक है, we will end the meeting here. पहले डाउट्स लूंगा आपके so far and then we will start.
Thank you very much.